Welcome to my students. Myself Pratiranjan Bhayara. I am lecturer in chemistry of Nalanda Vidya Mandir, Science College, Berhampur. Today I discussed to the another model. The last class I discussed to the Thomson atom model and Rutherford's atomic model. Today I discussed to the most important chapter like this Bohr's atomic model. Bohr's atomic model, as a scientist, the Danish scientist Niels Bohr in 1913 is proposed a theory. This is stability of atoms. Is proposed to the stability atoms. Like the Thomson model, Rutherford atom model कोना atoms collapse होतला. मतलब Niels Bohr कौन कहले atoms never collapse. And why atoms not collapse? ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ Rutherford's ର modification कले. Rutherford atom model को modification कले with the help of Planck's quantum theory. ले मैंने Planck's quantum theory किछ कहि दोछि से भी किछ postulate बार करतले ता विषय किछ कहरा. What is the Planck's quantum theory? Planck's quantum theory, Planck कहथिले any the energy is emitted or absorbed by the body continuously in the form of small packet energy. कौन कहले मैं कहा Planck's quantum कौन कहले any body is emitted or absorbed से किछि small packet of energy either emitted करिवो or absorb करिवो. This energy is called quantum. The energy is called quanta. The small packet of energy is known as quanta. In case of light, energy is called photon. In case of the light energy absorb karibo or emitted karibo, this is known as photon. This energy depends upon frequency. Energy का पर depend करिवो frequency depend. Like energy E is equal to h nu. This energy is equal to h nu. H is equal to Planck's constant. This value is 6.625 into 10 to the power minus 34 joule second or 6.625 10 to the power minus 27 or second. This is the Planck's quantum value and nu is equal to frequency. This last postulates the energy is multiple of whole number like E is equal to n h nu. This n is equal to whole number either 1, 2, 3 so on. Clear? E is equal to n is equal to either 1 or 2 or 3. This energy required from the in case of light energy. Next, in case of this quanta is less than of minimum energy, then this is not emitted or absorbed. In case of energy more less than of से कौन करे emitted करिबन कि absorb करिबन. जेति तो energy दरकार से से कौन करियो emitted करिवो or absorb करिवो. These are the Planck's quantum theory. Next is a Bohr atomic model.
This postulates Bohr's atomic model. This first postulates the atom is consist of massive positive charge. Is called nucleus. The electron moving around the nucleus in certain fixed circular path is known as orbit or stationary state. First postulate कौन कहले? Any atom is consist of massive positive charge. Last class रे कहले Rutherford's model कहले any massive positive charge is present in center of the nucleus. This called is center of the atom. This called is nucleus. like तमरा any atom ना consist करे sphere करियो त center तो कोन दोची nucleus थाउची nucleus चारि पट तम कोन electron थांते electron सो कोन तमरा around revolving around the nucleus in circular path. A circular path को जे तमरा orbit or stationary state बोली कहा जात. This is the first postulate. Second postulate, the orbit is associated with definite amount of energy level. Is called energy cell. Is called energy cell, which is designated K cell, L cell, M cell, N cell, and the number is 1, 2, 3, so on. Clear? जो तमरो ऑर्बिट होचे लाइक तुम एठी कोन होचे दिस न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कोन चारि पटे घुरी बुलंते घुरी बुलला आलो किछि तांको रे ऑर्बिट घुरी बुलंते ये ऑर्बिट किछि एनर्जी एसोसिएट करंते से एनर्जी को जाय एनर्जी लेवल और एनर्जी सेल बोली कहत नै द डिफरेंट नंबर सेल अछि K सेल L सेल M सेल N सेल. This is the K cell, L cell, M cell, N cell, and this number is K cell is 1. This first cell, L is second cell, and third cell, and fourth cell. These are the cell and energy cell. This K cell, N cell, M cell, N cell. This energy associated. केते से energy बाहर करियो energy associated. This is formula is equal to E gain is equal to minus 2 pi square Z square E fourth divided by N square X square. This is the एतिक से कौन करियो energy associate करियो K cell, L cell, M cell, N cell. In case of the K cell, this K cell is equal to N is equal to 1. N is equal to number of the orbit. H is equal to Planck's constant. The value is 6.625 to 10 to power minus 34 joule second. This pi value known. Z is equal to atomic number.
E is equal to charge of electron, m is equal to mass of electron. In case of hydrogen atom, this is the relation. En is equal to minus 2 pi square z square e fourth m divided by n square h square. This is z is equal to atomic number. E is equal to charge of electron. Hydrogen charge of electron 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. This m is equal to mass of electron, electron mass 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. This h is equal to Planck's constant. For example, for hydrogen atom name. For hydrogen atom, z is equal to 1. Value put करो. Value put कर कौन से डी En is equal to minus 1312 divided by n square. This is kilojoule per mole. एतिकी एनर्जी एसोसिएट करिवो फॉर हाइड्रोजन एटम. क्लियर? हम रखो इट minus 2 pi square दैछे. z वैल्यू पकेले केते फॉर हाइड्रोजन एटम z is equal to 1. E is equal to charge of electron पकेओ 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. M is equal to mass of electron 9.11 into 10 to the power minus 31 kg. H is equal to Planck's constant. This energy एतिकी एसोसिएट करिवो. For example, मानो तुम्हें helium लो, helium पे Z कितना होगा 2 is equal to En is equal to for energy of hydrogen into 4 is equal to helium. Like हम Z square अच्छी 2 square is equal to 4. In case of lithium होगा Z is equal to 3. This En is equal to Eh into 3 square 9. Is the energy of the helium. Clear? Here one रखो for hydrogen atom is equal to minus 1 312 divided by n square. Next third postulates. Only those orbits are permitted angular momentum which is integral multiple of h by 2 pi. Clear? What is the momentum? Momentum is equal to mass into velocity. अगर एक केस रे कोन तमर एठी न्यूक्लियस अछि. न्यूक्लियस चारपटे कोन इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन तो कोन रिवॉल्विंग करछि. एठी तमर आसीबो एंगुलर मोमेंटम. Like already momentum is equal to mass and velocity. This is the angular momentum. Angular momentum. Here हमर तरो radius अछि. एटी से कोन होबो? बुझि तार this is called r. एटी angular momentum is mass into this velocity into r. This is mvr. Only momentum is equal to mass into velocity. But angular momentum कोन is circular motion पड़छि multiply करो radius सहित. This is m into d means tangential velocity, r is equal to radius of the orbit. This mvr is equal to n into h by. This is whole number. N is equal to whole number. Only those orbits are permitted angular momentum.
तोरा सखण ऑर्बिट रे किछि इलेक्ट्रॉन थाय से कोन एंगुलर मोमेंटम करन केते एंगुलर मोमेंट करबे दिस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi this m is equal to mass of an electron v is equal to tangential velocity circular motion पे मिटी tangential velocity r is equal to radius of the orbit n is equal to this is whole number and h is equal to Planck's constant clear this is unit as panora this is k cell l cell in case of k cell par karo this is mvr is equal to what is the n value is equal to 1 into h by 2 pi for k cell पे another l cell this is mvr is equal to n is equal to 2 into h by 2 pi 2 cancel this is h by pi this is the angular momentum of the electron clear next fourth postulates the energy is emitted or absorbed discontinuously in the form of small packet of energy according to Planck's quantum theory in case of energy से कौन emitted करिवो either emitted करिवो or absorbed discontinuously ले continuously इलेक्ट्रॉन के भेले energy emitted करिवो कि absorb किछि छाडी से कौन रे either emitted करिवो तापरे absorb continuously emitted करनो तो continuously से absorb करनो तो लिखिन करियो either absorb or emitted this is E1 lower energy state this is E2 से कौन करे higher energy से कौन करिवो absorb कर this is absorb energy next this is E1 E2 this is emitted energy clear in case of से कोई एनर्जी करे से कौन करे हाई स्टेट से कौन करे एनर्जी आनिबो दिस इज कॉल्ड एब्जॉर्ब एनर्जी दिस इज E1 is equal to lower energy E2 is equal to higher energy clear ना ना एडी मोर किछि ई अन मोर को एनर्जी कर से कोन करो हायर एनर्जी स्टेट से कोन करो एनर्जी एब्जॉर्ब करो एब्जॉर्ब करला पर से कोन कर इधर नेक्स्ट कोन कर से एमिटेड कर दे दिस को दे दो दिस कॉल्ड एमिटेड एनर्जी लाइक हम पढ़े थे रिलेशन दा E is equal to h nu and del E is equal to h nu del E is equal to E2 minus E1 h nu energy किमिति नो से E2 minus E1 this is called h nu this is energy E2 minus E1 is equal to h nu either absorbed or emitted energy मन रखो जते लगो E1 मान एते से को करियो हाई स्टेट रो एनर्जी this called is absorbed energy again से को एनर्जी को दे दो this called is emitted energy ऐसे कोई से continuously का एनर्जी emitted करबे continuously absorb करबे either energy absorbed or emitted the small packet of energy the small packet is equal to quantum or photon next postulate the last postulate is
energy cannot be lost continuously. एटम कोन कंटीन्यूअसली से कोन एनर्जी लूज करिवो माने एनर्जी किछि कोन करे एनर्जी किछि देले से कोन तापर किछि एनर्जी थाए से कंटीन्यूअस कर दे से जगह कोन इलेक्ट्रॉन किछि मूविंग करते द इलेक्ट्रॉन moving in a particular energy level without losing energy. This state is called normal state or ground state. कौन मुझे देखो माना एटी कंटीन्यूअसली माने से the energy cannot be lost continuously से कंटीन्यूअसली गेन करबोनी कंटीन्यूअसली से लॉस्ट करबोनी हेले कोन जो इलेक्ट्रॉन जेडी मूवमेंट करूची ता पर भी किछि एनर्जी थाए विदाउट लूजिंग एनर्जी किछि एनर्जी लूज न करी ता पर किछि एनर्जी थाए से भी किछि पार्टिकुलर एनर्जी लेवल से कोन करियो मूविंग करतो से स्टेट को जाय नॉर्मल स्टेट और ग्राउंड स्टेट क्लियर इन केस ऑफ एनर्जी गेन करियो इन केस ऑफ एनर्जी गेन करले कोन अब मोर E1 अछि E1 बोलछि U2 से कोन कहला एनर्जी गेन करला ए गेन करले कोन करे ए मोर इलेक्ट्रॉन अछि इलेक्ट्रॉन कोन कहला हायर स्टेट से कोन कहला एनर्जी गेन करले ए गेन करले कोन हबो हायर एनर्जी ला ये कोन करे जंप करिवो हायर स्टेट This is K cell, L cell, M cell. मतलब L cell से कौन बोले एनर्जी गेन कला ये K cell नेला K cell मन रखो K cell, L cell जितने तुम्हारा बॉडी होता है एनर्जी बॉडी होता है तो K cell सबटा लोएस्ट एनर्जी तापर L तापर M जितने ऊपर जाओ तो एनर्जी बॉडी होता है हायर स्टेट कोडा L cell तापर आसियो M cell तापर N cell ये इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करले कौन हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन गेन करो ये हायर स्टेट इलेक्ट्रॉन गेन करले इलेक्ट्रॉन जंप करिवो हायर स्टेट को जंप करी माने जंप करले से स्टेट को आ जाए एक्साइटेड स्टेट क्लियर मन रखो विदाउट लूजिंग एनर्जी द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल दिस कॉल्ड इज ग्राउंड स्टेट ऑन गेनिंग एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप टू हायर स्टेट दिस कॉल्ड इज एक्साइटेड स्टेट हमर तो एक्साइटेड स्टेट होची अनस्टेबल हाईली अनस्टेबल out to मन रखो electron always remains in lowest energy मन रखो इलेक्ट्रॉन सब स्टेबल को रहबो लोएस्ट एनर्जी रे स्टेबल रहबो लाइक तुम्हारा फर्स्ट के सेल मन रखो बात ओरिजिनल स्टेट से कोन स्टेबल रहबो माने इलेक्ट्रॉन छी से कोन गला higher state to electron gain कला this called is absorb energy जब कले कौन से higher state पड़ा this is excited state again से कौन करता है original state को पड़ा सी this called is emitted energy मान रखो absorb energy जो सब लोचे higher to this lower to higher this lower orbit to higher orbit this is higher to lower ये कौन करियो lower to higher जीवो this called is absorb energy and the higher to lower this called is empty emitted energy but our original state को प्लस तक आ जाए emitted energy तो मन रखो excited state होची highly unstable એટલે से कौन करता original state को प्लस the original state asile it step wise asibo but direct se kon करता original state को प्लस कर is called excited state clear तोर पांचटा postulate हे गेला Bohr starting model मन रखो first postulate is equal to the atom is consist of massive positive charge any atom से kon करते massive positive charge है center थाए ताको जे nucleus
न्यूक्लियस चारिपटे कोन इलेक्ट्रॉन सब घूरी बुलंती बाय मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस घूरी बुलंती गोटे फिक्स्ड सर्कुलर पाथ रे घूरी बुलंती से फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को आ जाए ऑर्बिट और स्टेशनरी स्टेट बोली को आ जाए नेक्स्ट आसो जो ऑर्बिट अछि से ऑर्बिट किछि एसोसिएट करंती एनर्जी लेवल से एनर्जी लेवल को आ जाए एनर्जी सेल ताकू किछि डेजिग्नेट कराइ छि k सेल l सेल m सेल n सेल द नंबर कराइ छि 1 2 3 4 एनर्जी रिलेशन कहतली एनर्जी रिलेशन इक्वल टू -2 pi स्क्वायर मन रखेडा divided by m square h square this for hydrogen atom pi -1312 divided by n square this is the second postulate third postulate kono only those orbits is permitted to angular momentum जेतर इलेक्ट्रॉन थांती सिंगुलर कोना एंगुलर से कोन होते मोमेंटम करते केते मोमेंटम करबे this mvr is equal to l into h by 2 pi clear this is the angular moment of electron the third postulate is fourth postulate which कोन कहले the energy is emitted or absorbed in the small packet of energy is called is quantum or photon either energy absorb करिवो or emitted करिवो the energy cannot be continuously कोना loss करिवो नहीं continuously gain करिवो clear last postulate is in case of the electron moving in a particular energy level without losing energy this called is normal state or ground state in case of energy gain करिवो तो तमे कोन इलेक्ट्रॉन कोन करे हीट दियो पर लाइट दिस इलेक्ट्रॉन कोन करियो हाई स्टेट को जंप करियो हाई स्टेट होचे एक्साइटेड स्टेट मात्र इलेक्ट्रॉन ऑलवेज स्टेबल कोड आसीबो लोएस्ट एनर्जी रे सो तार ओरिजिनल स्टेट से कोन करियो पळासीबो क्लियर दिस इज द Bohr's atomic model important question क्लियर नेक्स्ट आसो लिमिटेशन पड़िया Bohr's atomic model में किछ नंबर ड्रॉबैक रहिला कौन ड्रॉ करेगला से कहतले इलेक्ट्रो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन प्लानर बट मॉडर्न रिसर्चर कौन कहले इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए 3 डायमेंशनल स्पेस लाइक तुम स्पेस रे घूरी बोलंती limitation of Bohr's atomic model the first is it fails to explain the spectra of multi-electron atom first से कौन गले it fails to explain the spectra of multi-electron atom से इलेक्ट्रॉन कोन जंप करंती फॉर हाइड्रोजन में बाहर करथिले इन केस एटम रे कोन मल्टी इलेक्ट्रॉन कोन करंती जंप करंती सेकंड the electrons moving in a circular path but the electron moving in 3-dimensional space clear सर्कुलर पाथ को हम कौन बोलते हैं ऑर्बिट मतलब इलेक्ट्रॉन सब कोन 3 डायमेंशनल स्पेस रे ग्रुप दिस कॉल्ड इज ऑर्बिटल क्लियर दिस इज ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल नेक्स्ट इट फेल्स explain chemical combination
and shapes. से कोन केमिकल कॉम्बिनेशन किन फॉर्मेशन होचे इन द शेप ऑफ एटम से एक्सप्लेन कर पहले नहीं के Bohr's atomic model. Last most important drawback is it assumes that definite amount of position and momentum of electron. Bohr's formula assume करथले कोन in case of electron रो position and momentum definite बाहर करिवो मात्र तुम केबेले माइक्रो पार्टिकल्स केबेले कोन at a time position momentum रो accuracy measure कर परिवो नहीं पर साइंटिस्ट कोन हेजनबर्ग नेक्स्ट क्लास में कहबे हेजनबर्ग से बडे प्रिंसिपल कहले अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से कोन कहले एट अ टाइम पोजीशन मोमेंटम के बेले एक्यूरेसी मेजर कर परबनी माइक्रो पार्टिकल्स के बेले पोजीशन मोमेंटम के बेले एक्यूरेसी रहबो इन केस ऑफ पोजीशन एक्यूरेसी ले दिस इज मोमेंटम अनसर्टेनिटी हेजो एदर मोमेंटम एक्यूरेसी पोजीशन रे कोन हबो अनसर्टेनिटी हेजो is called Heisenberg uncertainty principle. These are the drawback of Bohr's atomic model. Clear? Next is difference between orbit and orbital. What is the orbit? The electrons are moving in a circular path or a plane. This called is orbit. This orbital, the electron moving in three-dimensional space. This called is orbital. The electron moving in a circular path is called is orbit. What is the orbital? The electrons moving in a three-dimensional space. Like this is orbit, this orbital. This pair. This is orbital. Three-dimensional space रे पूरी करते. Next, this maximum of electron in a orbit 2n square, like n is equal to 1, the maximum electron is equal to 2, n is equal to 2, this is 4, this is 8, next 18, 32 according to 2n square rule. In maximum electron कितना होगा 2n square. मात्र this orbital and orbital maximum 2 electron present in the cell. Clear? Like different orbital कोन आसीबो this s p d f. एटा तमरो कोन सर्कुलर शेप आसीबो मतलब एटी डिफरेंट शेप आसीबो s p d f. s means spherical, p dumbbell shape, d dumbbell shape आसीबो s p d f. s रे maximum orbital होचे गुटे. this p रोचे maximum 3 orbital अछि. d रे 5टा, f रे 7टा ऑर्बिटल अछि. s रे गुटे p रे 3टा अछि. this is कोना एटी गुटीटा इलेक्ट्रॉन रोबेटी. this is orbital maximum 2 electron हो. this orbital maximum 2 electron. maximum कितना 6टा रोबेटी. this is 10 and 14 रोबेटी. clear?
मन रख ऑर्बिटल रे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होचे मिनिमम, दिस इज ऑर्बिटल रे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होचे मैक्सिमम। क्लियर? दिस इज डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट ऑर्बिटल। मन रख ऑर्बिट रे द सर्कुलर पाथ रे बोले ताको ऑर्बिट कह होचे, 3 डायमेंशनल रे ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन केते 2n स्क्वायर, द मैक्सिमम ऑर्बिटल गोटे केते होचे 2टा। क्लियर? आर प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन होचे मिनिमम आर होचे मैक्सिमम। आर शेप आसियो सर्कुलर पाथ, एडी डिफरेंट शेप आसियो, s ऑर्बिटल रो स्फेरिकल, p रो डम्बल, d रो डबल डम्बल आसियो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट orbital. Clear? This Bohr static model and limitation complete. Clear? The class is over. Next class I will discuss to the quantum number. So thank you.